ओके सो अपन चालू कर देंगे सर. सो गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल who are present here. So we are move forward for the next session or of our faculty development program on innovation, entrepreneurship and IPR. We have today's guest, Professor Sarvesh Biyani, Assistant Professor at SBJITMR Nagpur, and also he is a Entrepreneurship Development Cell in charge. Okay, so today Sarvesh sir has taking a session on taking change of your life through entrepreneurship. How we can change our life by your entrepreneurship. That is the basic or the main agenda or the main topic for the today's lecture. So without wasting of time, I hand over this session to Professor Sarvesh Biyani sir. Welcome sir. Good morning Sanjeev sir. Thank you so much for introduction. I guess जितने भी लोग connected है, everybody can interact with me. मैंने chat box में good morning लिखा है. If you are present, आप live है, सुन पा रहे हो तो आप reply कर सकते so that मैं वो audience के हिसाब से आज के session को आगे बढ़ाता हूँ. I hope आप unmute कर सकते हैं because chat box में बहुत सारी activities होने वाली है अगले 45 मिनट से 1 घंटा. तो जितने भी लोग प्रेजेंट है एटलीस्ट वाई डाल दो चैट बॉक्स में, मतलब मेरी आवाज उन तक जा रही है. बिकॉज टुडे सेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एज संजीव सर सेड, टेकिंग चार्ज, चेंजिंग योरसेल्फ, अंडरस्टैंडिंग द माइंडसेट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, हाउ इनोवेशन इज द बेसिक टूल, कैसे हेल्प होता है इनोवेशन को हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में लाके. एंड फाइनली देयर इज अ शॉर्ट एक्टिविटी ऑन व्हिच वी विल डिसाइड कि इफ I as an individual or my student want to start their journey, how can he start towards entrepreneurship? It's not necessary ki if I am doing job or I am doing any kind of self-employment work, I can't proceed towards it, but we'll understand step by step each and everything, and finally we'll be coming into conclusion ki why entrepreneurship is a need and hour for everyone, whether I'm working, whether I'm non-working, whether I'm having my own startup. So I guess I got only 3 reply, मतलब एक reply तो मेरा ही है. So if others can put, if they are, because till the time we interact at least with the help of chat box, मुझे जो भी communicate करना है, मुझे जो भी share करना है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा उतने heartful way में. I guess we all are engaged somewhere, but अगर if we can take out time and engage ourselves to certain kind of interaction, that will be a great help for each and every individual. So, yeah, good morning sir. We are listening carefully. Yeah, sir. Thank you so much, sir. I'm honored. I'm lucky to see you. So, as I shared with everyone, we'll be having certain kind of chat box interaction because video, audio, it will consume a time. And again, I completely understand and respect that we all are engaged. So, quickly, I'll be taking you through a journey. But वो journey पे जाने के लिए, I guess, जितने भी लोग वाकई present हैं and they're listening to me, put at least why in chat box. Put at least why in chat box means we'll be coming to know, मुझे समझ में आएगा. That's how I'll be interacting with you further with the help of PowerPoint presentation and video. Okay, so okay, and hands up will be working, you know, quickly. I guess मैं दूसरे स्क्रीन में देख रहा हूँ. I guess विवेक सर, सारिका मैम, हिमांशु रॉय सर, हेमंत सर, मयूरी मैम, फैजल सर, रूपाली मैम, Manjushri ma'am, if any one of you are present and listening, it's necessary कि हम लोग at least chat box के अंदर we inculcate at least yes or no. Until and unless it's of no use, we all are engaged somewhere, and that's the reason we need to keep on listening about entrepreneurship from different experts so that we can understand how to take out the time for yourself first. Okay, so shall we begin with the presentation? Yes, great. I'm getting that start हो रहा है, that warm up has been done, and we all are, see, we'll follow a particular protocol. Like you, I am a teacher, I keep listening from you, learning from you. Today is my part of telling you few things, sharing. It's just कि मुझे कुछ ज़्यादा नहीं आता है, मैंने आप ही लोगों से सीखा है, environment से सीखा है, मैं जब स्टूडेंट था वहाँ से सीखा हुआ, and throughout my life journey has certain kind of up and down which I'll be sharing today. I hope ये सेशन के बाद हम लोग सब एक वैल्यू लेके जाएंगे जिसको हम सोसाइटी में ट्रांसफर कर सकते हैं, हमारे फैमिली में ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड वी कैन हैव ए बिग एंड हैपनिंग लाइफ अहेड. आई गेस एवरीबॉडी इज ओके विथ इट, सो आई विल क्विकली शेयर द प्रेजेंटेशन. आई गेस संजीव सर आप
आपको शायद अनम्यूट रहना पड़ेगा कुछ समय के लिए, सो दैट मैं आप ही से बात कर सकूं मीनवाइल। ओके, स्क्रीन जैसे Okay, शेयर sir. हो जाती है मुझे बता दीजिए सर, if everything is visible, because no more I will be visible post that. Okay, so as sir has shared with you, the topic of today is taking charge or changing by only one word, that is called as entrepreneurship, and understanding this terminology and why this terminology has been pitching everywhere with शायद वो गवर्नमेंट बॉडीज में हो, कॉलेजेस में हो, रूरल एरिया में हो, अर्बन एरिया में, every sector you find this kind of terminology has drastically growing. But before understanding that, before we come from a job background and we often talk about this terminology, but हर वो चीज के लिए पहली स्टेप जरूरी होती है. So as this quote is nicely shared, that the journey of 1,000 miles begins with the first step. I am ready to share the biggest journey today, but I just wanted to understand how many are you ready. है ना? That's the reason I'd asked you to raise your hand or put Y in chat box. So that's how I come to know that you are also ready to understand the journey in a different way, different style, different angle, different modality. Okay. So everything we do today, we start with a prayer. We go to college, we start with a prayer. We go anywhere, we go to a movie, we start with a national anthem. The only reason is to unite us. Today's session might be of 45 minutes, 50 minutes, 1 hour, 1.5 hours. I just want you to take out a few seconds, just pray, just be thankful. I guess even I am asking for right kind of knowledge through coming through my mouth and helping you. So I just keep a pause for 1 or 2 seconds. Just pray, connect to the person whom you can connect very nicely. Because post this stage, we'll be understanding few things that are necessary for us. Then we'll be talking about entrepreneurship. So I'm giving you 2 seconds. Just relax, sit down, calm down. Whatever you are doing, if possible, stop it for a second. Okay. So we are ready to go. Before understanding the biggest terminology, as we say that entrepreneurship, first I need to understand what exactly is my life's purpose. My life purpose क्या है? And this is a बहुत बड़ा terminology, but my entire life depend on revolve around this only. And that's the only motivational factor for me to think of out of the box of my job or to help my student, nurture my students towards entrepreneurship. Is my life purpose is only that go to schooling, my parents have appreciated me, then I grown up, फिर मैंने जॉब किया, जॉब के बाद शादी हुई, बच्चे हुई, मैंने काम किया, फाइनेंशियली ग्रो किया, लाइफ को एंजॉय किया और फाइनली डाई हो गया. यही सिर्फ मेरे लाइफ का पर्पस है. कैन एनीबॉडी राइट इन चैट बॉक्स यस या नो? अगर हाँ यही है सिर्फ तो वाई लिखिए, अगर नहीं है इसके अलावा है तो सिर्फ एन डाल दीजिए चैट बॉक्स में. If this is the only purpose of my life, put Y. If not, then put no. Okay. So I guess I'm getting quite a bit no. Then what is the purpose of life? क्या पर्पस है? देखिए, पर्पस फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है. ये मेरे लिए भी डिफिकल्ट है, शायद आपके लिए भी डिफिकल्ट है, और बहुत सारे लोगों के लिए भी पर्पस आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. बिकॉज यू नो, बहुत सारे लोग दुनिया में आते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता कि उनके अंदर क्या गिफ्ट है. एट द एंड ऑफ द डे they come in this world and they go out of the world, and we every time we are trying to figure it out कि मैं दुनिया में आया क्यों. और ये आज के डेट में कम इसके लिए भी होते जा रहा है बिकॉज हम लोगों ने अपने आप को 24/7 वी keep ourselves engaging. That's the reason we don't have to time sit down and understand what exactly I want to do. So what exactly I want to do, ये आप आपके लेवल पे फिगर आउट करने की कोशिश करना पड़ेगा. बट द प्राइमरी थिंग व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए, रादर मेरे पर्पस को कैसे मैं डिफाइन कर सकता हूँ. विल क्विकली सी दैट. ओके, ग्रेट. सो पर्पस में क्या नहीं होना चाहिए, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. सो पर्पस, मेनी ए टाइम इट सेज दैट कि मेरा लाइफ में एक्स वाई जेड पर्पस है. कोई ये कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और स्टूडेंट सेज दैट यू सी इन द स्कूलिंग पैटर्न देयर इज अ वेरी नाइस काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और आपका एम क्या है करके. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, एंड धीरे धीरे व्हेन द टाइम कम दे गेट ग्रेजुएटेड, पोस्ट ग्रेजुएटेड, व्हाट दे वर सेइंग अर्लियर इट्स कंप्लीटली मिसिंग राइट नाउ. तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली पर्पस है, और ये पर्पस में क्या नहीं होना चाहिए हम लोगों ने वो समझेंगे. The first parameter in the purpose is most important is that it should not be need based.
It should not be need driven. So what will happen is that if it is a need based, need driven, आपकी जैसे ही वो नीड खत्म हो जाएंगी, आपके लिए लाइफ में और कुछ नहीं रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, मेरी नीड थी कि मुझे एक अच्छी जॉब लेना है, मेरी नीड थी मुझे एक अच्छी गाड़ी लेना है, मेरी नीड थी मुझे एक अच्छा स्टार्टअप करना है. जैसे ही वो नीड खत्म हो जाएंगी, तो एट द एंड ऑफ द डे मेरी जो रेस्ट ऑफ द लाइफ रहेंगी वो पर्पसलेस रहेंगी. सो हमेशा जब भी मैं पर्पस को लिखने की कोशिश करूं, समझने की कोशिश करूं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं, या किसी से उसका पर्पस पूछने की कोशिश करूं, मुझे ये चीज समझना, इट शुड नॉट बी नीड बेस्ड. Second and the most important parameter is it should not be time bound. The reason why we are seeing in the 21st century the amount of suicide cases are happening, the reason is that because they had defined everything time bound. For example, a student is telling that अगर मैं 22 years का हो गया हूँ, अगर मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल XYZ कोई IIT कोचिंग क्लासेस की, मैं 30 साल का हो गया हूँ, मैं UPSC क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है. The moment it is time bounded, एंड टाइम बाउंड में अगर वो चीज हो गई या नहीं होगी, तो इन दोनों के भी साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है. So my purpose should not be need driven, my purpose should not be time bonded, but my purpose में एक चीज होना चाहिए, it should be a noble. What do you mean by noble? एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है. कोई बच्चा है, उसे पूछा जाता है बचपन में कि व्हाट इज योर एम करके, वो बोलता है मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है ताकि मैं मेरी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को हेल्प करूं. The moment he says he want to become a doctor, ultimately वो फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और जो वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है फाइनेंशियली, एट द एंड ऑफ द डे उसके एंड रिजल्ट में वो सोसाइटी को भी हेल्प कर रहा है. दैट मीन्स वो लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज से लाइफ ऑफ चॉइस पे आया. लाइफ ऑफ चॉइस के बाद उसने वो जो अचीव करना था वो तो किया, बट उसका पर्पस बहुत बड़ा था, सोसाइटी को हेल्प करना, क्योर करना. So at this moment I have a clarity before understanding entrepreneurship is that मेरे पर्पस, जब मैं पर्पस को फाइंड आउट करूं, तो इट शुड नॉट बी नीड बेस्ड, इट शुड नॉट बी टाइम बाउंड, बट इट शुड बी नोबल बेस्ड. ओके, सो मोमेंट अगेन द क्वेश्चन लाइज द सेम, व्हाट इज योर लाइफ पर्पस. मैं नहीं चाहता कि आप मेरे से शेयर करें, बट दिस इज द क्वेश्चन मार्क फॉर आपके लिए भी और मेरे लिए भी, टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट एग्जैक्टली माय लाइफ पर्पस इज नाउ, बाय अंडरस्टैंडिंग दिस थ्री इंपॉर्टेंट थ्री इंटीग्रेंट्स. सो इसी आधार पे, इसी पैरामीटर में आई विल बी ड्रॉइंग डाउन माय पर्पस. सो क्विकली गोइंग अहेड एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अ ड्रीम देन. पर्पस तो बहुत बड़ी चीज है, समझने में भी नहीं आती है, मैं सोच सोच के मैं थक जाऊंगा. आई रिक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ टाइम, बट देन व्हाट इज अ ड्रीम. कैन एनीबडी राइट इन चैट बॉक्स व्हाट इज अ ड्रीम. या हमें पता है कि ड्रीम क्या होती है, वाई या नो में डाल दे, सो दैट आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग ना. अगर हमें पता है तो हम वाई डाल दे, नहीं पता है तो नो एन डाल दे. आइदर वाई डालना है, आइदर एन डालना है. डालना जरूरी है किसी न किसी को चैट बॉक्स में. व्हाट इज अ ड्रीम. सो वी अंडरस्टैंड दैट एक दो आंसर मुझे मिल रहे हैं. आई कैन क्विकली अंडरस्टैंड फ्रॉम इट कि किसी को पता है एंड किसी को नहीं पता है. इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ फैक्ट. बट एक बहुत स्वीट से बच्चे ने जब एपीजे अब्दुल कलाम जी को पूछा था कि सर ड्रीम वही होती है ना जो रात को आए और सुबह जब मैं उठता हूँ तो चले जाती है, वही ड्रीम है ना. तो उन्होंने बहुत अच्छे से रिप्लाई दिया था, मैं रिप्लाई आगे बताऊंगा. सो टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट वी नीड टू डू ए स्मॉल एक्सरसाइज. तो कितने लोग एक्सरसाइज करने के लिए रेडी है ना सुबह सुबह भी. इफ यू कैन हैव एन एक्सरसाइज इन एन first slot of an FDP session, so it's very good. So I will ask you a small exercise. This exercise has been carried out everywhere. ये बहुत scientific exercise है. This exercise will help us understand few things quickly when we will be listing down dream and understanding entrepreneurship. So I will be asking you to inhale. You have to inhale. आपको एक्सेल बिल्कुल भी नहीं करना है. So you have to inhale, 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 inhale till the time you can't further inhale. तो आपको तब तक इनहेल करना है जब तक आपको लगे नहीं कि आप फर्दर इनहेल कर सकते हो. द मोमेंट आपको लगता है कि आप इससे ज्यादा इनहेल नहीं कर सकते हो, तो आपने चैट बॉक्स में वाई लिख देना है कि आई कांट इनहेल फर्दर. तो शॉर्ट फॉर्म में वाई डाल दीजिए आप चैट बॉक्स के अंदर. सो वी स्टार्ट विद दैट. इनहेल, इनहेल. आपको एक्सेल बिल्कुल भी नहीं करना है, कंटिन्यूअसली आपको सिर्फ इनहेल करना है और चैट बॉक्स में वाई डालना है. सो जब आपको लगेगा आपने फर्दर इनहेल नहीं कर सकते, सो क्विकली इनहेल, 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 inhale, inhale, inhale. The moment you know that further you can't inhale, just put Y in chat box. So inhale, 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 inhale. Okay, great Rupali ma'am for है ना, great. Quickly दो तीन Y मिल जाएंगे. We will stop this and I will understand the importance of this activity. So inhale, 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 inhale. So I completely understand कि I got a 2-3 Y. I completely understand that further I can't inhale.
मैं फर्दर सांस नहीं ले सकता हूँ. In order to inhale further, I need to exhale. Now my question to Rupali ma'am, Ashwini ma'am, Dr. Brajesh sir, at this moment what exactly you want? At this moment what exactly you want? आपको exactly क्या चाहिए आप chat box में डाल सकते हैं. Exactly at this moment what do you want? So I guess exactly at this moment everybody want oxygen. Yes या no? अगर हाँ है तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए. इफ यू थिंक यू वांट ऑक्सीजन एट दिस मोमेंट, बिकॉज फर्दर इनहेल करने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए. द मोमेंट यू डोंट गेट ऑक्सीजन, यू माइट बी 10-15 सेकंड ऑफ फेंट हो जाओगे एंड स्लोली योर हार्ट बीट विल बी स्टॉपिंग एंड योर ब्रेन, एंड एट द एंड ऑफ द डे 45 मिनट से 1 घंटे के स्पैन के अंदर यू विल बी नो मोर. माय क्वेश्चन टू यू इज दैट जो भी आपका ड्रीम है ये उतना इंपॉर्टेंट है जितना एक ऑक्सीजन मिलना इंपॉर्टेंट है. होल्ड ऑन टू दिस. इफ योर ड्रीम is as important as getting an oxygen at this moment, all the ways, all the circumstances, all the situation will be figure it out. Is it clear? We're understanding now. What is your dream? Now the biggest question before asking a student, before understanding anybody, I need to ask to myself, am I writing my own destination or somebody else is writing my life? Am I writing my own life? Am I sketching my own life? Am I planning my own life? Am I putting all the action as per I want, or somebody else is controlling my life? The important question need to be understand before understanding entrepreneurship. Now, coming to the bigger picture, it look very fancy. Every student is attracted by such kind of image. Every adult get attracted. Every professional get attracted by such kind of image. वो बोला जाता है ना, भीड़ जा रही वहां मत जाइए. But it requires lots and lots of guts to separate yourself from the world and take that biggest jump. It's not necessary कि आपको जॉब छोड़ने की जरूरत है. It's not necessary कि आप जो कर रहे हैं उसे आपको completely stop करना है. It's not necessary, but can you take that amount of guts to jump from a quadrant to go to another quadrant? My question to you is very simple. In this image, you will be able to understand what exactly is your dream. Is to just earn money? आपके बैंक में इतना बैलेंस अर्न करना है ताकि आपको सोचना नहीं पड़े. Is it your dream? Travel the world, आपको world travel करना है with your family. Is your dream? I don't know what is that motivation for you. Getting a financial stability, financial independence, financial security is your dream. Because COVID had helped us understood that अगर एक single source of income पे if everybody is dependent, what can happen? Doing charity is your dream. Taking care of your parents by not just money, by giving the amount of time. Having a dream car, आपके पास कार है तो अच्छी कार आप ले सकते हैं, घर है तो अच्छा घर ले सकते हैं, और having spending a quality life with your, I exactly don't know. But whatever mentioned in this picture is these things are as important as oxygen, which was there 5 minutes prior to you. आई गेस आपका अगर इस पिक्चर में से कोई भी एक ड्रीम होगा ना, तो आपने गो बैक करके चेक करना है, इज आई एम डूइंग एनीथिंग फॉर माय दैट ड्रीम. So I hope this is clear, purpose is clear and the dream is clear, and why we need to take that jump towards from a crowded place to move towards a crowded place means job, self-employment, XYZ thing to an entrepreneurial domain. That jump was seen, a fish has jumped, fish ने वहां से अपने आप को jump करके एक नए और में चले गए. वैसे ही that jump is required. Nobody is going to push us, because if we want to write our destiny, we have to take charge of our life. We have to do that primary change in us. So I hope, great sir, for that money and financial independence you have written. I guess if this is clear, you can put a Y in chat box. I hope I'm able to add value right now. So if this is this, you can just put a Y in chat box. 2-3 Y will be tapering down to the most important part of this entire session, which need to be understood. Thank you, Hasan sir. Thank you, Brajesh sir. Anybody else who can put Y in chat box for their dream, for their purpose, for their family? And I guess thank you, Himanshu sir. I guess post Himanshu sir 1 Y and we'll start ahead. One more Y. Thank you so much. Thank you so much. Now understanding the biggest part of it. Now understanding the biggest two terminology that are revolving around us. One is a job and another is an entrepreneurship. So prior to this, we understood
the purpose of life, the dream, and at the end of the day, we need to figure out ourselves. Whatever I want to do it, I need to have that change in me, in my present situation. If I am doing job, if I'm doing any kind of self-employment like doctors, etc., various kind of profile. So job, you have a traditional nature of it. For entrepreneurship, you have a traditional nature of it. Job has its own challenges, entrepreneurship has its own challenges. So एक screen में बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ, it look very fancy, quickly I can jump from job to entrepreneurship, but practically इतना possible नहीं है. But when we inculcate certain things in our students, at least I myself should have a knowledge ki what are the plus point if a student goes in a job, and what are the plus point when a student goes in an entrepreneurship or start something, or what are the plus point when job and entrepreneurship both can be clubbed up together. Because when I was student in Ramdev Baba, mera ek hi motivation factor tha, when I was seeing my teacher, they all were teaching and they were all having a primary business where they were helping the society, not only financially growing, but at the end of the day they were adding value to their family life by providing enough kind of money and providing the work to the people whom they are employing. So job has a traditional nature where we work, where we spend, where we work on a system, जो system किसी और का driven रहता है, and at the end of the day, I don't have much responsibility after 9 to 6. But when I talk about entrepreneurship, I invest 3 to 5 hours or I invest X, Y, Z hours. The systems is driven by me. Entire responsibility is mine to drive it. All the goods, all the bads, all the ups, all the down, I have to take care of it, because all the profit and all the losses are mine and completely mine. So it always says that success doesn't come by a chance. It is always created by choices we take, we take on by steps. Ishan sir, I guess आपका mic start है, अगर विशाल आप सर, शुरू करेंगे. Ishan विशाल sir. सर, विशाल नाइक सर, अनम्यूट करो. Okay. Now we will quickly understand these four different quadrants. These four different quadrants are been shown in many places. You see various big businesses. You see these four quadrants are explained. आप एक company में जाते हो, ये four quadrants बताया जाते हैं. You see a book of a Robert Kiyosaki. This four quadrant has been explained. These four quadrants first I got introduced in my third year classroom when I was studying industrial engineering. One of the professor has explained me there are different ways people earn money. One is the job way, another is self-employment like doctor, CA, retailer, anything, and another one is a businessman, and finally an investor. The best part is that on the left hand side of your slide you see there is an employee and there is a self-employed. They earn money by spending their time. Means I had invested 10 hours, 8 hours in an SBJITMR engineering college and I got an amount of money out of it. Whether on the right hand side जो businessman रहते हैं ना, वो products या services में वो लोगों का time खरीदते हैं और वो products और services को बेचते हैं. So on the left hand side, I sell myself, I sell my time, I sell my skill set. On the right hand side, the people don't sell themselves. They sell either product, they sell either kind of services or consultancy, and they buy people time. So there is a big difference. If I talk about Haldiram, हम लोग हल्दीराम के बारे में बात करें नागपुर में, very simple. मैं हल्दीराम के लिए, for example, if somebody is working for Haldiram, is putting his 10 hour, but हल्दीराम के पास अगर 1000 employee है नागपुर के अंदर, so 1000 into 10, you understand the amount of productive hours he has, 10,000. So Haldiram earns of 10,000 productive hour, I earn of 10 hours which I am investing there. So there is a big difference. We need to understand this. Now, why everybody is pitching about entrepreneurship? Now, before understanding that, there is a very beautiful, nicely written description about an entrepreneurship. An entrepreneur. So entrepreneur एक इंसान रहता है ना, entrepreneurship is nothing but the process. So entrepreneurship is living a few years of your life like most people want, so that you can spend the rest of your life like most people can. See, it's very simple. ऐसे जैसे हम लोग students को भी, when we counsel student, we tell them the 18 to 22 is an age, ऐसा age है that's a making period. So 4 years you invest your career rightly, you work on your technical skill, personality, you work on your language. After 4 years you can enjoy the rest of your life 40 years as per what you want. Else आपने ये 4 साल वेस्ट कर दो, अगले 40 साल उसके हिसाब से जियो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, जहाँ पे आपके पसंद से आप जॉब नहीं कर रहे हो. सी, बहुत सिंपल है. सो संजीव सर, आई होप आई एम ऑडिबल एंड प्रेटी क्रिस्टल क्लियर. मुझे आप ही का चेहरा दिख रहा है, बाकी सबको तो मैं वाइब्स के थ्रू देख रहा हूँ कि दे आर प्रेजेंट, because we all are multitasker and they are into multiple things. Okay, so I hope entrepreneurship word has been crystal clear to everyone. Now the most important aspect of it, why government is pitching for it, and why should I become or why should I think of
guiding my student, understanding this terminology, and how together we can not only help our organization, but our family, our society, and at the end of the day, we can take a big contribution towards economic development of this country. So quickly we'll see, हम लोगों ने बहुत ड्रास्टिक चेंजेस देखा है पोस्ट कोविड, प्रायर टू कोविड, इन कोविड ऑल्सो. We had seen there are only two industries जो थोड़ा बहुत survive कर पाई थी. One was the software industry and other was the medical industry. Apart from that, every industry got collapsed in the COVID. And we had seen prior to COVID also, there was a job cut scenario was going on, and we had seen the unemployment rate is keep on rising because technology has taken its intervention, and we had seen how quickly everybody want to work with the help of technology. They don't want to deal with human beings, because human being अगर काम करता है 10 घंटे में से 1 घंटा लंच करता है, बाकी के 8 घंटे उसके खुद के इश्यूज रहते हैं, बट टेक्नोलॉजी 24 घंटे चलती रहती है. And that's the reason we are seeing continuously job cuts, layoff in all the scenarios. Another reason you see why government is pitching, because they had seen that the amount of students जो graduates हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, and the amount of jobs available at present, they are very low in nature. The amount of unemployment has keep on rising. And we had seen top companies like which has recruited highest amount of people in COVID, post first wave, before starting to the second wave. We had seen lots and lots of IT company, top IT company, Infy, Wipro, Cognizant, Accenture, जिन्होंने बहुत सारा लोगों को recruit किया था. Right now they don't have project, people are in bench. वो recruitment process जो fast हुई थी वो धीरे धीरे कम हो गई. So at the end of the day, government has the biggest issue to tackle. Second, the same story is in non-IT. Non-IT was already struggling prior to COVID. Sudden impact of COVID has made the entire IT industry, non-IT industry, to struggle a lot. And the data says that it will take a decade for the non-IT background to cope up or to come to the level where it has been stopped prior to the COVID. So okay. So we had understood entrepreneurship, why the government is focusing towards continuously focusing towards building of startups, funding people, asking students to enroll themselves, giving various platform at district level, state level, at country level. And that's the biggest reason, because government at this moment has no other option than to educate people, than to talk about entrepreneurship. The reason the entrepreneurship world has not been raised up the way government wanted, that's the reason government is coming with a number of things and it's making compulsory for driving the economy. So who is an entrepreneur? A person at the simple level who starts, who organize, who manage, who do all such things under a super kind of roof system, and at the end of the day he take the considerable amount of risk. He initiate, he do XYZ thing, he innovate, he invent, he become the leader, he becomes source of driven, he start an idea, he solve the problem, and at the end of the day he always lead by an example. So there is a huge difference between manager and an entrepreneur. Entrepreneur is one who shows the way, walk the way, do everything, then he asks you to do that. But whereas a manager, who even if doesn't know, he might assign you a task, and at the end of the day he just wants to do that. So there is a huge difference when you work in an organization also. You can understand who is a leader and who is a manager. Is it clear? So I hope this is clear to everyone. Now we'll be understanding the entire system, why government is teaching entrepreneurship, what is an entrepreneur word, and how a layman can understand, define entrepreneur and entrepreneurship, and how you can translate the same thing to your student and for your understanding also. How many of you are ready to see a very beautiful video? Put why in chat box so I can share it very quickly. है ना, वाई डाल दीजिए चैट बॉक्स में. 1 to Y will help me, है ना. संजीव सर, थैंक यू सो मच. हिमांशु सर, है ना. क्विकली रूपाली मैम. So this all are kind of active in this entire. So we'll see a very beautiful video. This video will help us understand so many things. At least I guess if you go to the narration, this video has an audio voice of Prime Minister of India, and आफ्टर सीइंग दिस वीडियो बहुत सारी चीजें हमारे अंदर भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी. सो क्विकली आई विल प्ले द वीडियो बिफोर सेइंग एनीथिंग. जस्ट अ सेकंड. इफ इन केस ऑडियो अगर नहीं आया तो मुझे क्विकली बता देना ताकि आई कैन स्विच ओवर इट.
देश के हर इंसान के दिल में एक ख्वाब होता है, उस ख्वाब के साथ उसके मन में कुछ विचार भी होता है, आइडियाज भी होते हैं। कुछ लोगों के आइडियाज हर दिन पैदा होते हैं और शाम होते होते बाल मुक्ति हो जाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आइडिया के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो उससे बाहर नहीं निकलते और पूरा परिवार परेशान हो जाते हैं कि ये कुछ करता नहीं, बस इसी में लगा रहता है, किसी से बात नहीं करता है, यार दोस्तों से नहीं मिल रहा है, क्या हो गया है इसको, कहीं पागल तो नहीं हो गया। लेकिन वही एक दिन कुछ कमाल करके दिखा देता है, तो पूरे परिवार को लगता है नहीं साहब, इसमें तो पहले से ही ऐसा था, क्योंकि ज्यादातर ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। और जब कुछ सोचा हूँ नहीं बेटे अपना काम नहीं, तू कहीं नौकरी कर ले। शुरू में जब दोस्तों ने सुना होगा बहुत मजाक उड़ाया होगा, तो पास किया होगा, जाते आते आपको उसी उपनाम से सुनाते होंगे ये कुछ करने वाला है, ये करने वाला है। फिर जब कल आया होगा सारी दौर विरोध हुआ होगा, सब दोस्त परिवार के लोगों ने विरोध किया होगा, नहीं ये नहीं करना है, जाओ कमाओ नौकरी कर लो। उस विरोध के बावजूद भी जो टिके होंगे, आज सब लोग कहते होंगे कि यार इसने तो कमाल कर दिया, कुछ ऐसा मुझे भी करना है। हर किसी के स्टार्टअप की जिंदगी की यही कहानी है। विशाल और सफल कारोबार का निर्माण करने के लिए असफलताओं से बचा नहीं जा सकता। जो पानी से भागता है वो कभी तैरना नहीं सीखता, एक बार तो डूबना ही पड़ता है, तब जाकर के तैरना। हर चीज की कभी शुरुआत होती है तो जो करता है उसी को दिखता है क्या होने वाला है, औरों को वही दिखता है ये पागल है। पैसे कमाने के इरादे से आता है वो कभी स्टार्टअप कर ही नहीं सकता। जो कुछ करने के इरादे से आता है, पैसे उसके लिए बाय प्रोडक्ट होते हैं। एक भीतर से ऊर्जा होती है, भीतर में सपने होते हैं, उसके साथ खप जाने का इरादा होता है, तब जाकर के परिस्थितियां पलट। जो ऐप बनाता है या जो स्टार्टअप की दुनिया में एंटर होता है या कोई नई चीजों को इनोवेट करता है, उसके मूल में उसके अंदर एक संवेदना है। बहुत कम लोग इस बात को अनुभव कर पाएंगे। और जब वो कोई बुरे हाल देखता है, कोई समस्या देखता है, वो उसे सोने नहीं देते। समस्या उसकी नहीं है, किसी और की है, लेकिन वो उसे सोने नहीं देते। उसका मन करता है मैं कोई रास्ता खोजूं, मैं कुछ करूं इसके। किसी के लिए जो दर्द होता है, जो हमें हमारे भीतर एक ऐसी अवस्था पैदा करती है जो लाखों करोड़ों के दर्द को दूर करने का कारण बन जाती है, और तब स्टार्टअप हो। हर स्टार्टअप के पीछे कोई न कोई समस्या के समाधान का इरादा रहना चाहिए, और जब किसी स्टार्टअप के पास समस्या के समाधान का इरादा होगा तो उसकी संतोष का लेवल भी कहीं कुछ होगा। स्टार्टअप कहने के बाद लोगों की सोच होती है तो बड़ा हाई फाई होगा, लैपटॉप के बाहर दुनिया कुछ नहीं होगी, मोबाइल से जुड़े होंगे, कि हर किसी के पास $1 बिलियन का काम हो रहा है और 2000 लोग काम करेंगे। 5 लोगों को भी अगर मैं रोजगार देता हूं तो मेरा स्टार्टअप मेरे देश को आगे बढ़ा। एक साइकोलॉजिकल चेंज लाना है कि यूथ के दिमाग में जॉब सीकर की मानसिकता से उसको बाहर लाना है, वो जॉब क्रिएटर बने। और एक बार उसके दिमाग में आ गया कि मुझे 2 लोगों की जिंदगी को संभालना है, तो कर ले। मैं वो कुछ करके दिखाऊं जिसमें मैं जॉब क्रिएटर बनूं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं जिसके कारण किसी की जिंदगी में मैं काम आऊं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं मेरे देश को एक कदम आगे ले जाने में मेरा भी कोई योगदान है। इतना भी अगर सपना लेकर चलते हम बहुत कुछ कर सकते हैं। So I guess वीडियो ने बहुत कुछ बताया। द मैसेज इज क्लियर। अगेन अगर मैसेज क्लियर है तो यू कैन रेज योर हैंड, या फिर आप चैट बॉक्स के अंदर वाई डाल सकते हो। द मैसेज इज क्लियर।
जिन्होंने भी वो वीडियो को अच्छे से सुना है, pretty clear. See, the government want to develop, the country want to develop, the district want to develop themselves, the organization where you are working, they want to develop, everybody want to develop. And we need to understand the basic terminology is that बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो शायद फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर रहेंगे, कोई सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर रहेगा. Many a time we were confused also कि 10 लोगों को employment दे रहा है, can we tell him is an entrepreneur? The housewife जिसके पास 2-3 लोग एम्प्लॉयड कर रहे हैं घर के अंदर, is she an entrepreneur? So ये बहुत बड़ा मिथ है, but at the end of the day in this entire video एक बहुत अच्छी तरीके से crystal clear defined होता है कि if you are providing certain kind of income to the people around you, the basic definition as per the video says that आप भी एक entrepreneur हो कहीं ना कहीं. Is it clear? So that the same thing which ऐसे बोला जाता है कि हम लोग जॉब सीकर का एटीट्यूड लेके आगे नहीं बढ़ाए हमारी जनरेशन को, हम खुद भी, बट जॉब क्रिएटर, जॉब प्रोवाइडर के एटीट्यूड के साथ हम लोगों को आगे लेके जाए. बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी विल नॉट ओनली टीच सो मेनी थिंग्स, but at the end of the day, whenever that person falls down, whether he's working for somebody else or working for eventually himself, he know how to bounce back. So okay, so I guess we are clear with the terminology of entrepreneur and entrepreneurship, and we also understand the word innovation, because till the time मैं जो पैटर्न में कर रहा हूँ, अगर मैं वहां पे इनोवेशन नहीं लेके आऊँ तो मैं वहां पे कोई चेंज नहीं लेके आ पाऊंगा. मैं अगर चेंज नहीं लेके आ पाऊंगा तो कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा तो पॉजिटिव रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा. So we'll quickly understand the need of entrepreneurship. We had already seen the biggest need is rapid increase in the labor force. Labor force जो increase हो रहा है बहुत rapid तरीके से हो रहा है. The another part is unemployment. That's the reason we all together have to pitch work towards entrepreneurship, motivate others. So can be another biggest myth, can entrepreneurship can be taught? So again the two side of coin it is, and उसको define करने के लिए बहुत simple है. A person with an inborn talent can have an added advantage. A person जिसके family में already entrepreneurs है has an added advantage. But ये बात को भी हमने देखना चाहिए कि जितने भी लोग first time entrepreneur भी बने हैं उनके family में कोई और entrepreneur नहीं था. So another side of the coin is that by training, by mindset, by right attitude, by surrounding, also एक student एक entrepreneurial journey की तरफ जा सकता है. If the right amount of training has been provided in the curriculum, right amount of importance has been given, right amount of development, infrastructure, aura, everything, एक student वो journey को ले भी सकता है, बन भी सकता है, create भी हो सकता है, finally आगे भी जा सकता है. So finally we are coming to an end of today's most important part of our session. How do we start? How do we ask our student to start? Or whenever we are motivating, nurturing anybody, how whenever he approach to you, what should be the exact thing we should tell him? So first, if I understand that हम लोग अभी सब scratch पे है, the first important thing I need to look after is think of an idea. आइडिया कुछ भी हो सकता है. रादर मैं आइडिया के बारे में सोच नहीं सकता हूँ तो आई कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम अराउंड मी. आई क्विकली लिस्ट डाउन ऑल दी प्रॉब्लम्स अराउंड मी. मैंने देख लिया कि मैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, या मैं जो घर में रह रहा हूँ, या मैं जो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, उस दौरान मैं डेली में 10 प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहा हूँ. So quickly I can just write it down all the 10 problem, and quickly जब मैं 10 प्रॉब्लम को लिखना चालू करूंगा, उस पर सोचना चालू करूंगा, चिंतन करना चालू करूंगा, ऑटोमेटिकली आई विल कम टू अंडरस्टैंड कि इन 10 प्रॉब्लम में से ये एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन इमीडिएट मिलना जरूरी है. बिकॉज ये प्रॉब्लम मेरी भी नहीं है, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की है जिसके कारण उनको बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके कारण उनको बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे हैं. सो थिंक ऑफ एन आइडिया एट द प्राइमरी लेवल. The moment if you are not getting any idea, आप देखिए कि जितने भी डेवलप कंट्रीज है वहां पे कौन सी ऐसी चीज है जो आज के डेट में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, फास्ट एंड वे में हो रही है. सो यू कैन कॉपी दैट आइडिया ऑल्सो. So if you can't think with an idea, just copy an idea from any developed city, from any developed country, and automatically जब आप उस चीज को कॉपी कर लेते हो तो आपके पास उसके पूरे जितने भी फेलियर पैटर्न है उसका पूरा सिस्टम आ जाता है. So you have an added advantage. सेकंड, सर्च फॉर एन मेंटर. ऐसे बोला जाता है स्विमिंग आप उस इंसान से नहीं सीख सकते हो जिसको स्विमिंग आती नहीं. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी लर्न द स्विमिंग फ्रॉम द सेम पर्सन हु डजंट नो स्विमिंग. इन शॉर्ट, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वो सब कुछ नहीं है. या फिर मैं इन शॉर्ट एग्जांपल में बताऊं, आपको कोई घूमने जाना है, आप ऐसे इंसान से पूछ रहे हो मुझे बाय रोड गोवा जाना है, प्लीज गाइड करो, तो आपको गाइड जरूर करेगा. द मोमेंट यू आस्क हिम अ क्वेश्चन कि आप कभी बाय रोड गोवा गए हो क्या, तो बोलेगा मैं नहीं गया हूँ,
बट मैंने कोई वीडियो देखा है, किसी से सुना है तो ऐसा ऐसा कर। So that's the reason we are seeing in India people are going for gate coaching. ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जो खुद गेट क्रैक नहीं कर चुके. People are learning for UPSC. They want to crack UPSC examination, go as IAS, IPS, IFS. वैसे इंसान से सीख रहे हैं जिसने कभी खुद ने UPSC क्रैक नहीं किया. So in India we see everywhere हम लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो खुद वो फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, एंड एट द एंड ऑफ द डे हम भी केओस में रहते हैं, वो भी केओस में रहते हैं, और हमको लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप मुझसे नहीं होगा. So the first important thing, you need to search for a mentor, search for a coach, seek for a guidance from the people who are actually. सिंपल सी बात है, अगर मैं साइकिल पे आ रहा हूँ तो मैं एज ए टीचर बहुत मोटिवेट कर सकता हूँ बच्चे को साइकिल से ज्यादा स्कूटी लेने के लिए, बट मैं अगर उसको एग्जांपल दे रहा हूँ कि तू ये लाइफ के अंदर बहुत कुछ कर सकता है, बढ़िया कर सकता है, यू कैन गेट एन चार्टर्ड प्लेन, हेलीकॉप्टर, यू कैन हैव दिस, वो सुनेगा जरूर, बट वो ये देखेगा कि सर जो बोलते हैं वो खुद और करते हैं, और वो मुझे कोई चीजें बता रहे हैं, वो मुझ पे कभी बिलीव नहीं करेंगे. दैट्स द रीजन ही वोंट बिलीव इन मी, एंड नाइदर ही विल बिलीव इन द टर्म ऑफ entrepreneurship. So at simple level, first I need to think of an idea or copy any idea, or think of any kind of innovation around me which can create a big difference. सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, मेरे फैमिली में कोई प्रॉब्लम, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, या मेरे जर्नी में जो 10-12 घंटे की जर्नी में, आई कीप राइट इट डाउन, मैं चिंतन करूँ, उस पर सोचूं. द मोमेंट आई थिंक ऑफ इट, आई कैन गो टुवर्ड्स, आई कैन सर्च फॉर अ मेंटर. द मोमेंट आई सर्च फॉर अ मेंटर, मेरी आइडिया को एक स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस बन जाएगा, and I can start taking small risk, and at the end of the day if सब कुछ ठीक रहा तो you can make not only your family, not only your organization, not only your society, not only your country, but you can make the world know about what you are doing and make it a very beautiful place. So this is what at a short nutshell मैं आपको बताना चाहता था, communicate करना चाहता था कि how I as a teacher can start my entrepreneurial journey, how you as an individual can start your entrepreneurial journey, understanding this important terminology, because till the time you figure out your dream, you figure out your purpose, there is nothing which will be motivating you. और आपके पास अगर कोई motivation नहीं रहेगा तो आप out of the box ना सोच पाओगे, ना discuss कर पाओगे, ना extra effort लोगे. When the purpose is clear, when the dream is clear, when the reason is clear, you take that extra mile, you take that extra effort of thinking, solving, creating, making a world a beautiful place. So with this, I would like to conclude today's session. If we have any question, we will take. Sanjeev sir? Yes, it was a nice session, sir. Now I request all the participants, if you have any doubt, any question to regarding entrepreneurship, how to start the entrepreneurship, okay, you can ask to the guest. Yes, any question from audience side? वो दो ही केस हो सकते हैं, अगर सब कुछ समझा है या कुछ नहीं समझा है. So I guess few people has been connected very late. So I hope this session has added value. If yes, you can put Y in chat box. Session ने अगर आपके लाइफ में really value add किया है, you can put Y in chat box so that I also know. And I will quickly summarize in 2 minutes what entire क्या-क्या चीजें हम लोगों ने. Hello. Yes, any question? Hello. हाँ, किरकम मैम. Yes. Yes, Rupali ma'am. सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, बट जो सर ने एक एक्टिविटी कराई थी इनहेल वाली, उससे मैं कुछ कोरिलेट करना चाहती हूँ. Yes, yes ma'am. Sure ma'am. जैसे सर ने बोला इनहेल, और हम जब एक्सेल नहीं करते हैं तो सफोकेशन होने लगता है, कुछ तो भी हो जाता है. तो इसको मैं कोरिलेट ऐसा करना चाहती हूँ कि हम सब समाज में रहते हैं और हमने प्रकृति से अगर सब कुछ लिया ही और कुछ वापस नहीं किया तो हमारा भी सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा. तो ये नेचर का रूल है कि हम अगर कुछ ले रहे हैं प्रकृति से तो हमको वापस भी करना चाहिए. हम अगर समाज से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो समाज को हमने कुछ देना भी चाहिए. इसलिए भी अगर हम सिर्फ हर चीज हमको मिलनी चाहिए ये सोच के अगर हम करेंगे तो नहीं होगा शायद. मतलब अगर हम सर जैसा है, सर का जो टॉपिक था एंटरप्रेन्योर करने का, तो उस समय हमने छोटे से भी स्टार्ट किया तो थोड़ा बहुत हम समाज को लौटा भी सकते हैं. ऐसा मुझे लगता है कि वो एक वहाँ कोरिलेशन था, इसलिए जस्ट मैंने शेयर किया. नहीं मैम, थैंक यू सो मच, एंड दैट इज व्हाट आवर टॉपिक इज, टेकिंग चार्ज, टेकिंग दैट स्मॉल चेंज जहाँ पे आप हैं.
शायद आपके एक चेंज से आपके फैमिली में एक बेटरमेंट आ सकता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ सकता है, आप में आ सकता है, और वही देख के हमारे स्टूडेंट में आ सकता है। दैट्स हाउ वी ऑल कैन ग्रो। वो चेंज लेना, वो फर्स्ट स्टेप लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स द रीज़न मैंने आज के सेशन को बहुत बड़ा नहीं रखा। आई जस्ट वांटेड टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कैसे ड्रीम को फिगर आउट करना ज़रूरी है, बिकॉज वो अगर नहीं रहेगा तो हम वो चेंज भी नहीं लेंगे। बिकॉज हमारे अगर माइंड में वो क्लियर नहीं है और हम वो हमारे स्टूडेंट में वो पहली चीज क्लियर नहीं करा हुआ है, वो कहता था ना टिल द टाइम दी वाई इज क्लियर, वो सब कुछ बहुत डिफिकल्ट लगता है। बट अगर वाई क्लियर है तो हम वे ऑटोमेटिकली फिगर आउट कर ही लेते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने उसमें विजडम डाला। थैंक यू मैडम। यस, एनी क्वेश्चन अगेन? Yes, any question from audience side again? Okay, सर्वेश सर, एक छोटा सा एक्सपीरियंस था मेरा वाला रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप। मैडम ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि हम समाज से कुछ तो भी कर रहे हैं तो उनको भी कुछ देना चाहिए, जस्ट लाइक इन ए हेल्प। A small moment I have shared with you, sir, on this platform of entrepreneurship. I have started my entrepreneurship in the construction industry. Okay, एक 5 से 6 लोग हैं सर जो मेरे अंडर काम करते हैं, जिनकी वजह से रोजी रोटी चलती है। तो ऐसा एक प्राउड मोमेंट आता है कि जिस समय हम उनको सैलरी करते हैं और अपनी वजह से उनको जब खुशी होती है, ठीक है, तो उसका जो मोल रहता है एज एंटरप्रेन्योर वो बहुत अच्छा रहता है सर। एक छोटा सा वो इनहेल, जैसा मैडम ने बोला ना, समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हम अपनी तरफ से दे सकते हैं। सो एवरीवन कैन स्टार्ट देयर एंटरप्रेन्योरशिप इन अ स्मॉल स्केल आल्सो, व्हिच कैन बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, है ना। अपने लिए तो हम करते ही है, लेकिन सोसाइटी के लिए भी अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। दैट इज वन ऑफ द, आई विल कोरिलेट दैट इनहेल इन दिस साइड सर। एब्सोल्युटली राइट सर, एंड दैट्स व्हाट वी वांट इज दैट कि अगर आज हम लोग 25-30 पार्टिसिपेंट है यहाँ पे, इफ यू कैन प्रोवाइड दैट वन एम्प्लॉयमेंट आल्सो टू समबडी इन अनदर 6-7 मंथ, सो दैट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर दैट पर्सन। और जब मैं उसे सैलरी दूंगा तो फीलिंग बहुत अलग है, जब दैट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी आल्सो, और उसके लिए भी, एंड दैट्स हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट टू द अनएम्प्लॉयमेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी एट ए बिगर लेवल। Definitely, sir, and that is the Yes, motto of our faculty development program, sir, to enhance our skill in innovation, entrepreneurship, and IPR. So, absolutely right. yeah. So, thank you very much, sir. So, once again, good afternoon, everyone. It has been such an honor to be a part of this wonderful session. On behalf of organization of SBJITMR, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guest, Professor Sarvesh Biyani, sir. Thank you, sir. Sincere thanks to all the head of various departments who are attending this session. A wide round of applause and the thanks to all the participants who made this session is a memorable one. Finally, I would like to thank all of you present here and making the time to be with us today and helping us to make this event. Thank you, one and all. Thank you very much. Okay, Thank you, sir. participants, the attendance sheet and feedback link is shared with you. On second afternoon session, it will start at 2 p.m. One of the professor from our institute, that is Akshay Deshmukh sir, has very much explained about the various startup policies. So I request everyone to join that afternoon session to understand the various policies regarding startup. Okay, thank you very much. Have a nice day. Thank you, Sarvesh sir. Thank you so much.